is a mirage? Mirage is a phenomena where you see a pool of water or a shining thing in a desert where there is no chance of water. So why do we say there is water or there is an oasis there? Because anything that reflects back, when as like primitive human beings, बहुत सारे primitive attributes हमारे दिमाग में अभी भी हैं, which is if anything, what is the most naturally reflecting and refracting surface? Water. We have made man-made है, mirrors are man-made. So first thing that comes to our primitive mind is अरे ये reflect कर रहा है मतलब this is water. Because in water we can see reflection, isn't it? Refraction भी होता है water में, but reflection हमें clearly दिखता है. So what happens is, let's say I am on a camel. Whatever, this is a camel and this is me. Okay? Very funny. Now, another thing you have to know about sand is that sand becomes very hot in summers. So when it becomes very hot, can I say this sand is hot? So if it is hot, so what happens to the air which is close to the sand? It becomes lighter. Lighter, मतलब density कम हो गया. So can I say this is rare? This is rare. But the surface which is not close to the sand is denser. Yes. So can I say now we can't say this is dense, this is there, बीच में कुछ नहीं है. धीरे-धीरे rare से dense होता है कि नहीं? That is something we can say हो गया. Can we say slowly it becomes denser? This is denser, this is rarer. So when I am looking from here, I am looking from denser medium to rarer. Yes, absolutely. So I am looking. No, Baba, this is science. You read. So when I am looking from denser to rarer medium, what will happen? If whole light, it will bend towards or away from the normal? Away from the normal. ठीक है? Now at this layer, let's say this is layer A, B, C, D. At this layer, already it has gone away from the normal. At this layer, it will go farther away from the normal or not? So it will go farther away from the normal. Almost, can you see it is becoming one with the acid. Can you almost see it is becoming like a straight line? Yes. है कि नहीं? अभी देखते हैं layers. Isn't it becoming like a horizontal line? Yes. Vertically, but धीरे-धीरे horizontally हो रहा है. Let me make another layer for you. मुझे reflect हो जाएगा ना? Another layer. One second. Finish this one. यहाँ पे सोचो यहाँ पे है sand. तो यहाँ पे layer D है. यहाँ पे again it will refract away from normal. So again it has gone even more closer. So now closer जाके सोचो ये मेरा layer E है. Here again it will go away from normal. So what happens is, I will tell you. What happens is when it goes away from the normal, there comes a point where it becomes one with the horizontal line. And after that point, if the angle increases a little more, then it starts reflecting in the denser medium. In the what medium? Denser medium. This is actually the reason why. Can you see now it has started reflecting? So reflect करेगा मतलब पानी लगेगा ना हमको. So this is actually not refraction. This is called as total internal reflection. Total internal reflection बोलते हैं इसको. So total internal reflection कब होता है? When constantly the medium is becoming rarer and rarer and rarer. There comes a point that the angle of incidence becomes so high that the substance it starts reflecting instead of reflecting. You. Now write it down. So it is reflecting the water in the air. No, it is reflecting the water in the air. It is reflecting the sand only. But when sand is reflecting, what will I see? Now let's say what is it reflecting? Let's say I am looking at a shrub. So ये shrub ऐसे था. Reflect होके कैसे लगेगा? उल्टा हो जाएगा कि नहीं? So ये shrub ऐसा था. Now how is the shrub looking? After these layers of refraction, let's say the shrub was here. Yes. After reflection, it will look like this. Yes. So what does it appear to be? Water. Yes. तो इसलिए दूर से गर्मी के दिन में डेजर्ट में क्या लगता है? Sand उल्टा हो जाता है. Sand उल्टा नहीं होता है बेटा. It appears to be. जितना पास जाओगे उतना it will disappear. इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट दिखेगा. पर आपने लाइट रेज सन कैप से ड्रॉ करो या इससे ड्रॉ करो, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है. यहाँ से करती हूँ. यहाँ से भी अगर करते हैं. मैम ई पॉइंट का अगर वो ई पॉइंट नहीं, ई इज अ लेयर. हाँ, तो फिर वो इंटरफेस के साथ वो हो जाएगा ना.
क्या हो जाएगा, इंटरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा, पर फिर वो रिफ्लेक्ट करने के पहले से पूरा ये स्ट्रेट हो जाएगा. यस, एट अ पॉइंट इट विल बिकम स्ट्रेट. सी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है, उस पॉइंट पे जाके स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स like a straight, angle of refraction becomes a straight line. The moment the angle of refraction becomes a straight line, लेकिन ये incident ray दूसरा ray तो जा रहा है ना, pass there are many rays. So when it passes, it becomes even more tilted. See, first of all, I have to tell this to you very clearly. Total internal reflection आपको clear concept नहीं है. So actually ये reflection है ही नहीं ना, refraction है. This is total internal reflection. Is a completely different concept. So what is written in the textbook, please take it with a grain of salt. अंडरस्टूड. पर ऐसा होता क्यों है? साइंटिफिक. एक और बताती हूँ तुमको एग्जांपल. कभी भी तुम लोग देखोगे, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मिराज आप ऐसे ही पढ़ो जैसे आपको पढ़ाया गया है, बट दिस इज नॉट ट्रू. Just because you will not understand total internal reflection, it's not given in your textbook at this level. 10th में जाके अच्छे से पढ़ोगे total internal reflection. एक और नाम है, when this angle of incidence becomes something, the angle of refraction becomes a straight line. This angle is also called as a critical angle. So all these things you will study in the later years. Right now your brain won't be able to. critical angle होता क्या है? वही तो बोल रही हूँ. अभी इतना analyze मत करो. The angle at which the refracted ray becomes horizontal is the angle of a critical angle. It is different for different media. पहले light का basic concept समझो, धीरे-धीरे you will learn everything. I promise. So another thing I am telling you about total internal reflection right now. Swimming pool के अंदर there are lights sometimes. So those lights, so this is, let's say this is my swimming pool. Okay, there are lights inside ना, ऐसे होता है ना lights. This is how the lights are, whatever. So they put the lights in such an angle such that the angle is greater than the critical angle of water. क्यों करते हैं ये, बता. This is the denser medium, this is the rarer medium, air, water. What happens is, if the angle of incidence is greater than the critical angle, that means that total internal reflection हो जाएगा. ये water का ये जो light का ray है, it will never leave the surface of the water. So what happens is, it looks like a beautiful, you know, when you see lights in the swimming pool, it looks so nice because all the light rays stay inside the water. यहाँ पे भी एक है, सोच, कितना सुंदर सा एक पैसा ही बचता है. फिगर बनेगा instead of leaving. क्रिटिकल एंगल क्या है वाटर का? तो ऐसी साइड Critical angle water का है around 35 degrees. नहीं, पर अगर वहाँ पे क्या है, अगर आपको दिखाना है क्रिटिकल एंगल डायग्राम, खड़े होते तो यहाँ पे जब देख रही, ideally water से air में refraction होना चाहिए था, but when you are checking with your light ray, you are seeing that the water, that the light ray is not leaving the water only. That means it is greater than critical. Understanding what I said? उसका कोई unit For है क्या? example, देती हूँ. उसका unit नहीं है क्या? हाँ, कुछ. एक second, I'll show you. कुछ भी यूनिट नहीं होता. एंगल डिग्री होता है. एक सेकंड, लाइट बंद करो. क्या आता है मेरे पास? प्रिज्म. पीजी मिशन इम्पॉसिबल. भाई को बैठ दे. तू देखा कि मिशन इम्पॉसिबल है? तो ये मजा मेरे के साथ. Okay, all of you come over. तू बंद करना. Come, stand over there. See, I have taken a green light because it is the. अरे यार तुम लोग तेरा इधर आ, पीछे इधर आ. All of you figure out where to stand. I'll show you one by one. Relax. See, this is a prism, but can I say this is air around it and this is glass? So ideally क्या होना चाहिए? Glass से air में जब ये जा रहा है, तभी reflection होना चाहिए ना? Refraction होना चाहिए. Refraction होना चाहिए मतलब यहाँ पे कहीं पे मुझे light दिखेगा, which is actually happening right now. See, I'm keeping my hand over here. Can I see the light falling on my hand? Yes. दिख रहा है? जितना भी ये because this is not a plain surface, इसीलिए दो light दिख रहा है. ठीक है? Light पे आ रहा है कि नहीं? अभी देखो ये यहाँ पे ये red दिख रहा है, एक एक करके दिखाऊंगी. सही? ये देखो. ये रेड लाइट दिख रहा है ऊपर रेड लाइट दिख रहा है. हाँ. अभी देखते हैं ये दिख रहा है रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो गया. हाँ. इधर कोई लाइट दिख रहा है अभी? कैन यू सी दिस?
there is no reflection happening. मैम पर वो रेड लाइट कहाँ से आ रहा है? ये ही जाके अंदर जाके रेड हो जाता है. Its speed is decreasing, so it's becoming red. हाँ. Now it अगर सर ऊपर से डाला तो स्ट्रेट डाला तो सर होगा. सब स्ट्रेट डाला तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा. वैसे नहीं. सब कुछ होगा उधर. मैं वो सिखाने की कोशिश नहीं करूँगी. आप लोग ने पूछा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो दिखा दो. इतने टाइम तक देखो यहाँ पे आ रहा था कि नहीं, हाथ में आ रहा है कि नहीं लाइट, सही तू देखे क्या करके देखो. आ रहा है ना लाइट हाथ में, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी तरीके का. बट नाउ द मोमेंट आई कीप changing and tilting the angle at a point, you will see. Look up. Can you see that the red light is now getting reflected? दिखा? अभी सिर्फ इधर आ रहा है, मेरे हाथ पे आ रहा है इधर. It's only coming to you, so it's actually getting total internally reflected. Understood? Come all of you, एक बार एक के बाद एक. देख, अभी एक एंगल पे डाला मैंने. रिफ्रैक्शन हो गया, मेरे हाथ पे दिख रहा है. लेकिन अब ये रेड लाइट दिख रहा है तुझको? अभी देख. Now, can you see the red light is getting reflected? Can I see anything here? Refraction हुआ? नहीं. Reflect होके यहाँ पे आ गया. देख, can you see these two lines? आपकी बारी है. तो पास से देख बेटा. ये देख, रेड लाइट देख रिफ्लेक्ट हो गया. हाँ, इधर देख, यहाँ पे मैं हाथ रख दूँ, कुछ भी दिख रहा है क्या? No, nothing is coming out from this side. Understood? Total internal reflection हुआ है. See, here reflection is happening. ऐसा लगा. कैसे समझ में आया रिफ्लेक्शन हो रहा है? यहाँ पर आ रहा है. ये देख, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये कोई भी. हाँ, कम. Now can you see the red light? Yes. हाँ, now see slowly, it's getting refracted ना so far. अभी देख, red light got reflected. दिख रहा है? हाँ. रिफ्लेक्ट हो गया ये. मतलब क्या, मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, it is greater than the critical angle. That's why it got. Understood? You see the red beam? Yes. So now it's getting refracted normally. But now you will see, यहाँ पे डॉट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस तरफ से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. The beam sometimes I'm able to see it. No, I saw. We need it to be dark. The beam ना ऐसे यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है. I am putting it over here, but it's coming here. Why? Because it's getting reflected from inside. Come little closer. क्या आवाज है? ऐसे लाइट से जा रहा है. मैं ऊपर से डाल